Mr. Tapang versus Executive Engineer Hydropower Tawang. सब इंफॉर्मेशन तो मिला लेकिन सीरियल नंबर 10 का नहीं दिया बोल रहा था लास्ट टाइम. जी जी सर. सर मिला है तो कुछ तो मैं आपको रिप्रेजेंट तो मैंने ये एमिकेबल सॉल्यूशन कर लिया. मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ. जो सिंगल था सर आपका वर्जन में. जी. सीरियल नंबर 10 तक जो है उनका ये था लास्ट ईयर में दिया. जो एडवर्टाइजमेंट जी उनका कटिंग और ये चाहिए जी. तो नॉट अवेलेबल है इन लोकेशन में उसकी जरूरत करके देना जी. तो सर ये हम जो एडवर्टाइजमेंट जो है उसका एससी ऑफिस में होगा जी. तो वहां से हम लोगों ने ढूंढ कर कुछ निकाला है जी. तो इसका एथिकली सेटिस्फाइड में यहाँ दे देगा तो शायद जरूरत नहीं ना जी. If you are giving the information, so then I don't think there's no need to be giving it about it. देखिए सर एक्चुअली रिपोर्ट पे यही लिखा हुआ है कि जो एपिक ने उसने आपके सामने में वो प्रपोज किया है वो कागज नहीं मिला है. वी हैव टू अफेक्ट डैमेज फ्रॉम को देने के लिए बात किया है. हाँ. हाँ. तो ठीक है ऐसे रेलेवेबल सोर्स अगर आपका डॉक्यूमेंट होता है तो दे दीजिए सर. लेकिन आई मीन एक्चुअली एज एप्रोप्रिएट रूल हो साथ में मेरे को हुआ उसने अगर ठीक है ढूंढ के भी अगर न्यूज पेपर को अगर वो देता हूँ सर मेरे से कर देते एपिडेमिक मैं छोड़ देते हैं. अगर सही है एक्चुअली रूल पर अगर हाँ. उस दिन जो बोल भी लिया हाँ. तो अगर इसका साथ एपिडेमिक बना के ला सकता है एज पर मैं क्लेम कर सकता है. हाँ. हाँ. ऐसे ही और मैं रिसीव करता हूँ क्योंकि आप आपको ला दिया सर के सामने में. एक्चुअली ये एज पर राइट एक्ट में आपका जो बोलने में थोड़ा मैं गलत आपको सवाल उठा सकता हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप ला दिया थोड़ा सा तो दे दीजिए. सर 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 Right. एडवर्टाइजमेंट लोग है ना. हाँ. 6 नंबर. एडवर्टाइजमेंट जो कॉपी फ्लोक था उसको आपको नहीं मिला था लास्ट टाइम में जी. तो उससे अभी वो दिया है. जी सर. ओके सर. देखिए तो हम लोग इसको डिस्पोज करने से ठीक है तो अननेसेसरी है तो बहुत लंबा चौड़ा ना. बिल्कुल. वजन पीआईओ वजन अर्थ एस्टिमेट फिल्म receive 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 the remaining information from the PIO which was applied under serial number 10 of this form A. Next line. No? After receipt of received pending information, the appellant requested the commission
dispose of the traffic. PIO produce the remaining information for the code of the commission and then they forward to the appeal. The hearing both the parties. Committee the monitoring of information by the PIO to the appeal. The commission hereby order. Number one, the remaining information to be provided to the appellant have been submitted today in the court of the commission. The appellant has total of this appeal and therefore the commission does not further hear this appeal and therefore the appeal this appeal is hereby disposed of before once for all. Only, no? Visakhapam versus Yes, sir. Executive Engineer RWG Layang Yangte. Layang Yangte, Layang to Majuriang, 35 kilometers, stage 2. का इंफॉर्मेशन को मिला है नहीं मिला लास्ट टाइम आपको उनको ये इंफॉर्मेशन को देंगे बोल रहे थे आपका डिवीजन में एक ही है इन्होंने 17 काम वर्क का इंफॉर्मेशन आपसे मांगा है तो among those 17 works you say only one work comes under your division the rest comes under Colorian division. So now I ask you, have you furnished the information regarding the work that is under you? तो इसका बारे में वो लास्ट टाइम मेरा जी किचन किया था अभी वो माँ का सर्टिफिकेट है जी तो उसमें मुझे चाहिए जी तो मैं यही है तो ये है मतलब ये डिवीजन में सर से भी हम न्यूली ज्वाइन हुआ है तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मालूम नहीं है लेयंग टू मजूरियंग रोड को तो मालूम होता होगा सर ये है 19 में बस विद आपका डिवीजन का अंदर में है तो जी सर उसका इंफॉर्मेशन को देना था सर ये जो प्रोजेक्ट है वो भी कैंसिल 2017-18 का है तो अभी जो कर कोरोना है मतलब हमको इसका स्पेसिफिक समय में कुछ मालूम नहीं और वो मैंने वो ये जो इंजीनियरिंग टीचर होती है अगर में ट्रांसफर जो जे सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर हो तो डॉक्यूमेंट तो मुझे कहीं नजर में नहीं मिला से नहीं सर
No, you cannot say that. जितना भी पुराना हो, the work is under your division. The information has to be under you, and you have to provide. आप कल ही join बात का बात है. Example, even if you have joined 1 month back, but if the work has been executed by your division, you have to provide the information to the appellant. If those informations are specific and not that too voluminous, uh, can attract Section 7 Clause 9 or attract Section 6. तो आपको देना देना है. लास्ट टाइम तो जो आपका पीआईओ बोला कि देगा करके, रेस्ट इंफॉर्मेशन को वो कोलोरियन को ट्रांसफर करेगा फॉर्मेट को, एंड देन ही हैज रिटन, वो लिखा हुआ है. हाँ लिखा हुआ है सर, वहाँ में एक कॉपी दिया देता है। तो आप कोलोरियन का एक्शन को कांटेक्ट नहीं किया? नहीं सर, मैं नहीं किया। एक बार करना चाहिए आप भी. एक्चुअली इसको रेफरेंस का होता अगर देता भी है, तो अगर वो देता है बोला वो आपको रिकॉर्ड कब देना चाहिए था, जो 19 योपिंग का इंफॉर्मेशन प्राइसिंग का, तो आपका पास रिकॉर्ड है क्या? इसको नहीं दिया आपको? सर ये मेरे पास नहीं मिला है। उसका एक फोटो ले लो फोन से और जाके एक बार कांटेक्ट करो एक्शन को. सर गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली 17 जो नंबर में है, 16 है ये लोग का. 16 16 का इंफॉर्मेशन ये लोग देना है. measured in हाँ. 35 kilo. हाँ, ये लोग If देना we है. have compulsion here on the हाँ. court at that time, he said appropriately defined the हाँ. within the time 50 हाँ. days. वो देगा. So that अब बहुत समय हो गया, हाँ. तो इसमें आप लोग ये नहीं बोल सकते जो अभी अभी कर्म मत पाइए, क्योंकि ट्रांसफर तो आना जाना रहता है. हाँ. किसी का जो चेयर कुर्सी फाइल तो वही रहता है ना. तो फाइल तो रहता है. ये चीज में ये बोलने से मेरा एक अच्छा बात है, क्योंकि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खराब मत करिए. तो इसको आप लोग हमेशा अपना रिस्पॉन्सिबल रखें. जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप बिल बनाने में तो आपका कागज डिवीजन में रहना चाहिए. हाँ मैं ये इशू करता हूँ, क्योंकि सिस्टम नंबर जो अभी ट्रांसफर वहाँ है, मैं इसको आपका जो एजुकेटिव ने बोला मैं इसको फॉलो करूंगा, लेकिन आपका जो 16 जो यहाँ में इशू किया है वो अपना जुरिस्डिक्शन में है 19 यूपिन. एक्चुअली ये काम भी टेंडर जो ऑन द योर जुरिस्डिक्शन 19 यूपिन में संग्राम में मतलब फेब्रिकेट जो हम लोग करने से पहले यही टेंडर थे वहां. क्योंकि आप अभी बोल रहे थे, आप अभी बोले नया आया, ये नहीं दोबारा नहीं बनता. ये कागज रहता ही है ना, कागज को जाता है वो पॉकेट में लेके जाता है ना, अपना जो बैंक में मतलब डिपोजिट कर देता है. ये सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता है इस प्रकार का ना करें, क्योंकि हम लोग जो कमिश्नर के सामने एक यूनियन यू हैव रिप्लाई योर प्रेजेंटेशन, आप ये अच्छा दीजिए, क्योंकि हम आपसे छोटा भाई, लेकिन मेरा बात को खराब नहीं पाने. मैं आपके एक एक्ट का रूल पे नियम पे टाइप पे आपको मैं जवाब देता. थैंक यू. उसको पे देना है सर, ये आई वांट नीड दिस. अभी ये जो ये लोग फ्लाइंग यांग से पीआईओ जो कोलोरियन पीआईओ को लिखा है वो पेपर को, आप एक बार कोलोरियन पीआईओ एक्शन को उस कॉपी का साथ में जाके मिलिए. तो who knows if they have posted it through post office, it might take time, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पोस्टल सर्विस को करेक्ट करना है. गलत है अभी का जो प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल पासीघाट में 3 पोस्ट ऑफिस है, जैन कॉलेज, जीटीसी एंड मेन पासीघाट. तो अब पासीघाट का ही अंदर को आदमी को जैन कॉलेज पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करने से वो लोग क्या करता है, उसको पासीघाट डायरेक्ट नहीं जाके वो प्रोसेस, वो लोग का पोस्टल सर्विस क्या होता है. उस दिन एक सुना है एक केस, पासीघाट जैन कॉलेज ईटानगर भेजता है उसको, फिर ईटानगर वाला फिर पासीघाट भेजता है मेन में. सो दिस देयर इज अ प्रोसीजरल लेट. वो लोग का वर्किंग जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा. इसलिए हु नोस, वो अगर वहां से पोस्ट किया है पोस्ट ऑफिस में तो ईटानगर आएगा, फिर वो यहाँ से वहां भेजेगा. ऐसे होने से 2 महीना भी लग सकता है. इसलिए वंस आप उस रिपोर्ट के साथ में उस ऑफिस को मिलिए. आप बताइए अभी कब तक इनको दे सकता है इंफॉर्मेशन को, आपका जो अंदर में है. सर तो मैं ये करेगा को प्रकाश करने का सर 1 महीने टाइम हम लोग बहुत ले लिया है. आगे भी टाइम सर आप देखिए विद इन द टाइम 6 हियरिंग
seventh hearing. Today, seven. Just come to मतलब यह नहीं जैसे कि ये जो जितने में स्लो नंबर 16 है ना 16 का अंदर में there are more than मैंने 4 या 5 इतिहास नहीं ऐसा नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही डीपीआर होगा ना, ये तो एक ही प्रोजेक्ट को मांग रहा है 16 में। मतलब उसमें हम लोग ऐसे होते हैं के लिए क्लियर करते हैं एल सेक्शन होता है देन क्रॉस सेक्शन होता है देन ड्राइंग पार्ट होता है whatever be he has asked information for only one project, not like both आपका जो डिवीजन में जब ये कोलोरियन डिवीजन जब आएगा तो बोल सकते हैं कोलोरियन डिवीजन ये हम लोग का 16 प्रोजेक्ट्स है तो 16 projects का giving the information in one go may not be possible because the informations are too voluminous. But in your case, under your division, he has asked for only one project information. So it shouldn't be that much of a burden to you. And file to वहाँ होगा ही 2000 कब का बोला आप? हाँ सर कुछ महीना टाइम दीजिए मैं उसका पहले में तो मुझे 15 दिन इधर में को मैं देखिए तो मैं उसको बुला के दे लेगा मैं टेलीफोन कॉल करता हूँ लेकिन एक महीना टाइम बिफोर दैट मैंने 10 दिन 15 दिन आगे में भी थे मैंने उसको ना क्या ब्रेन कर सकता वो मैं आगे ले गया आज से 15 दिन तक टाइम ना सर एक्चुअली ये जो इतना भी जगह आपको लंबा भी नहीं है इतना सिर्फ 7 पॉइंट है सिर्फ आपको एज ही एक्चुअली आपको बहुत मांगा नहीं मांगे ये हम तो 7 पे सर आप अच्छा से दे दीजिए तो हम पाने से सर इक्वल डॉक्यूमेंट है आपको पूछ दिया तो आप देखिए सर आप भी कर हमने पढ़ा 2 इयर्स सो फार दैट 2 इयर्स हाउ लॉन्ग देखो कोर्ट में मर्डर केस में भी तो ऐसे नहीं जाता है दिस इज सिंपलिसिटी एकदम एमिकेबली विद इन द टाइम 15 डेज में आपको दे सकता है एक्चुअली बोलने में इट इज माय ओनली रिक्वेस्ट यू सर इफ यू सर क्योंकि आप लोग गरम मत पाइए आप भी अभी नया ट्रांसफर है मानता हूँ ट्रांसफर तो आना जाना करता है आई एम सेल्फ बिकॉज इस प्रकार का ना करें वहां में आप पहले देखने का बाद बोलना चाहिए है कि आप उल्टा वहां फोन करके प्रेजेंटेशन सर का सामने देने से ठीक था कुछ भी आज लाता है बोलते मैं दिल बहुत खुशी होना था तो मैं तो एक क्लेम में मैं क्लेम कर सकता आपको 15 डेज में ऑनर करता हूँ ऐसे कमिश्नर के साथ में आपको 15 डेज तो मैं दे देते पहले 15 डे अभी 15 डे 1 मंथ दैट मींस आल्सो इनफ और आपको 1 मंथ में नहीं मांगा और देने नहीं दूंगा इन्होंने मांगा है डीपीआर कॉपी यूटिलाइज सर्टिफिकेट लयांग टू मजुरियांग का यूसी मांगा है फोटोग्राफ जियोटेक कॉपीज मांगा है प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा है पेमेंट जो कितना अमाउंट पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को वो मांगा है चेकलिस्ट डिटेल्स की फर्निश रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ है तो और सबको वो सिंपल तो आप लोग को राइट कर दिया सर सिंपल the affiliate present सही फील मेक सर मैं आपको पर्सन के साथ फील होता है तो इसको एनफोर्स पेनल्टी देने भी देना है क्योंकि एज पर और आरटी एक्ट रूल्स नियम पे अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना पेजेस का इंफॉर्मेशन होगा तो पर पेज पेनलाइज करता है तो जी जी नाउ विदाउट नोइंग द approximate pages how can I be fixing the penalty वो है ना ऐसे abruptly I cannot be fixing कि 5,000 पेनलाइज कर रहा है 10,000 या 20,000 या 25,000 तो पर पेज हिसाब से ही वो पेनल्टी लगता है एज पर सेक्शन ऑफ आर्टिकल 25,000 जो अगर फील होता है तो आप गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए मैं हेल्प करूंगा फील होता है ना हाँ बिल्कुल well I'm claim as for गवर्नमेंट का रिव्यू में जाना है see here there was a defect in your form not defect actually the division was bifurcated into 2 divisions and the rest of the information that you applied from this PIO have been transferred to that other division. yes. So इसमें actually ये हो गया delay हो गया main तो had all the works been under him I could also have given a judgment in that way but here आपका PIO आपका नाम को रिकॉर्ड कर लेते the PIO represented by अपना नाम बताइए API
Young Tree, Young view, sir. Young View Locum, Okay. Loka, LOK, Young View Loka, Assistant Engineer, RWD, Layang Yangte Division, Kurung Kume District, Government of Arunachal Pradesh, present. Heard the appellant. The appellant stated that the PIO has not provided him information that he has applied under serial number 16 of his Form A, despite the PIO assuring to provide the information before the next hearing on 28 April 2026. While the next hearing is today, on June 4, the PIO was under liability furnish the information to him. Next, and next, the PIO also assured to transfer the Form A to the PIO come Executive Engineer RWT Colonial Division. Currently District Government of AP, for which a copy of the letter written to the Executive Engineer Colonial Division that it had to be made available to him also. Now I don't have any idea as a copy for the same has not been made available to me by the PIO. Heard the representative of the PIO. The representative of the PIO stated that the PIO could not attain today's hearing because of medical reasons, and therefore requested me to appear the court hearing on his behalf. Further, it is paid
before the court that a little more time be given to the office of the PIO to furnish the information to appellant. After hearing both the parties, the commission hereby observes number one. In the last hearing of 20th April 2026, the PIO had assured the commission that they will transfer the Form A of the appellant to the PIO from Executive Engineer RWD Colonial Division, wherein out of 17 numbers of projects, information brought by the appellant have been executed by the Executive Engineer RWD Colonial Division. In that line, the PIO come Executive Engineer RWD Layang Yangte has transferred the Form A of the appellant to the Executive Engineer RWD Colonial Division on 22 May 2026. Uh, a copy of which is made available to the commission. Next, the PIO in the PIO in the instant appeal was to provide the information related to serial number 16 of the Form A of the appellant, that is construction of road from Layang to Mazuria, 35 kilometers, stage 2. As you had assured the same before the court of this commission in the 6th hearing held on 28 April 2026. Next, instead of furnishing the information to the
appellant, the representative of the PIO still prays for giving time giving time of 1 month to furnish the information to the appellant. Under the above observation, the Commission hereby order as given below. Number 1, send summons to the Executive Engineer RWT Honorarium Division, Kurumkume District, Government of Arunachal Pradesh, to be present to provide the information as sought by the appellant in his Form A, which has been transferred from the Executive Engineer RWT Lion Yangpe Kurumkume District, Government of AP. The PIO cum Executive Engineer Rural Work Division, Koloriang, Kurumkume District, Government of AP, will be present in the next date of hearing without fail, and failing with the necessary action as provided under Adhyay Act 2005 will be initiated against him. Next, information relating to the serial number 16 of the Form A of the appellant be provided to the appellant within 20 days from today. Failing which, the Commission will be compelled to penalize the PIO by the Commission for disobeying the order of this Commission. Send the summon to the PIO cum Executive Engineer RWT Koloriang to attend the next date of hearing. Next, notice need not be sent to the PIO cum Executive Engineer RWT Layang Yangpe and the appellant as both parties present in the court today, and fix the next date of hearing 24th September. 24th September. 10:30 up to 10:30 PM. हाँ, एपीआई आप सुनिए, आप 20 आज से लेके 20 दिन के अंदर में आपका इंफॉर्मेशन को वट एवर इंफॉर्मेशन आपके पास में है वो एपिलेंट को दे दीजिएगा. तो एपिलेंट विल लेट अस नो कि आप
आपने इनको इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, और उस समय नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक नहीं दिया तो आई हैव टू पेनलाइज यूएसपीआईएफ योर ऑफिस। तो 24 सितंबर लिख लीजिए अभी। हाँ, और वो एक बार आप जाके कोलरियन को भी वो फोटो को दिखा दीजिएगा लेटर को, और अगर पूछे आपको मिला कि नहीं मिला, मिला हुआ होने से तो वो इंफॉर्मेशन देना है, तो साइन कर लीजिए। आपका हो गया अभी। रोहू पेंजी वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी याजाली डिवीजन। पेंजी present, the PRO represented by SHRI Tokodopum. Yes, Tokodopum, junior engineer, actually subdivision PWD, Pioneer District, na? Pioneer District, Government of AP, with an authorization letter from the executive engineer, come PIO coming engineer, totally division PWD. भी अब बताइए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया ये लोग? नहीं, एक भी नहीं दिया। एक भी आज तक तो 6 मंथ 7 मंथ हो गया, एक भी पुलिस में। एंड आप जब फर्स्ट अपील किया चीफ इंजीनियर के वहाँ पे, तो वहाँ पे हियरिंग हुआ था? हियरिंग हुआ था, तो हियरिंग हुआ था, हमको बोला है डॉक्यूमेंट दे दो, उन लोग को भी डॉक्यूमेंट दे दो, उन लोग का सामने में बोला, तो उन लोग बोला है डॉक्यूमेंट हमको सिस्टम भी नहीं किया। सिस्टम में क्या नहीं किया, ये तो उसमें यहाँ में एक ये था का मल्टीपर्पज इंडोर था, मल्टीपर्पज भी नहीं लगा कि हम इंडोर को सिर्फ नहीं, ये आपका तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोस्टम एट लॉट विलेज, तो उसमें आपने मांगा है एनआईटी कॉपी, जो गेजेट में पब्लिश हुआ है, कॉपी ऑफ डीपीआर सैंक्शन ऑर्डर, टेक्निकल सैंक्शन ऑर्डर, फाइल नोटिंग, जियो टैगिंग सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, completion certificate, world order personal final bills, name of contractor in case of farm, name of proprietors, details of measurement containing quality of work done, check leaves, completion certificate, photograph of work undertaken, name of engineer concerned, verifying officer sign in the bill and challan, check and furnish total numbers of labors engaged in works. तो आप रीजन अभी तक क्यों इनको नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन बता सकेंगे आप? सर ये इसमें सर ये फर्स्ट सर ये जो इसका जो कंटेंट अच्छे सर इसको ये अच्छा इसमें जो नेम ऑफ वर्क है ना जी, तो हम लोग बोलते हैं कि नेम ऑफ वर्क को करेक्शन करके लाने, तो इसका है ज्ञान सर इसका जो जी, नेम ऑफ वर्क रोस्टम लिखा हुआ है ये। हाँ सर कस्टम लिखा है तो मल्टीपर्पज का है
इंदौर का मल्टीपर्पज करता है, इंदौर का अलग है ना, ये अभी रोस्टम का बात करेंगे। रोस्टम का तो रोस्टम ही है, रोस्टम का रोस्टम ही है। रोस्तम का है, 2-3 देश है। रोस्टम का तो रोस्टम है, आपका इंदौर का तो मल्टीपर्पज रोस्तम रोस्टम में जब हियरिंग किया था जी चीफ साहब का, में जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट किया, इनको दे दिया है। हाँ सबमिट, उसमें सबमिट किया था ऑलरेडी, तो उसका रिसीप्ट भी यहाँ में ओके किया था। रखिएगा। डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट में कंपेयर ये हाँ, सबमिट, तो उसके बाद ये जो और क्लेम नहीं किया है एज पार्ट ना, कि मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स और इक्वल है या इसमें ये चाहिए, और क्लेम नहीं किया, तो हम लोग छोड़ दिया, तो सीधा इसमें आ गए। कौन सा आप बोल रहे हैं, आपको अब तो यहाँ पे रिसीव किया है तो रोस्तम का। रोस्टम रोस्टम तो रोस्टम को हमको ये हमको दिया था, हाँ। में हमको दिया था, हाँ। तो हम इनकम्प्लीट है, वो इंजीनियरिंग को भी हम बोला है। इनकम्प्लीट है तो कौन सा आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है? आपका ये ना, जियोटेक भी दिया नहीं हमको, जियोटेक दिया नहीं है, और एनआईटी पब्लिश किया नहीं है ना, और डीपीआर को सिर्फ दिया है, ओनली फॉर डीपीआर को दिया है, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपका कंप्लीटेड रिपोर्ट भी नहीं दिया। ऐसा डीपीआर सिर्फ हमको दिया, ओनली फॉर डीपीआर। इसमें चीफ चीफ इंजीनियर का वो ऑर्डर कहाँ है, आपके पास में है? क्योंकि आपने यहाँ अटैच नहीं किया है। यहाँ अटैच करने से हम उसका ऑर्डर को पढ़ के हो सकते नहीं सकते ये फिर मेरे कोर्ट पे बुलाया था, वो दिल्ली हो गया। उसको आप अटैच करना है हमेशा जब फाइल करता है ना। ये एक्स्ट्रा कॉपी आपका नहीं है, ये यूज कर हो जाएगा ये। कौन कौन सा अभी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया, आप एक पेन पेपर में नोट कर लीजिएगा। If you don't have the- do you have a pen? बताइए आप कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं मिला? आपका एनआईटी पब्लिश दे दिया उसका। एनआईटी गेजेट में आज तक कोई एनआईटी नोटिफाई नहीं करता होगा, गेजेट में तो पब्लिश नहीं करता होगा ना। गेजेट तो उतना सारा अरुणाचल का एनआईटी को पब्लिश नहीं करेगा, करता है न्यूज पेपर में करता है, गेजेट में मांग रहा है ये गेजेट। हाँ, गेजेट नोटिफिकेशन तो नहीं करता होगा, गेजेट में तो नहीं करेगा होगा मेरा। वो तो टेंडर तो होगा, वो रूल है, लेकिन गेजेट गेजेट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट का टेंडर को हम गेजेट नोटिफिकेशन तो नहीं सुना है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को गेजेट में नोटिफाई करता है, तो टेंडर को आप लिखना चाहिए था जो न्यूज़पेपर में या मीडिया में ऐसा, अब यहाँ गेजेट लिखा हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं। गेजेट में हर टेंडर नोटिफाई नहीं करेगा गवर्नमेंट, वट एवर भी उसको अंडरस्टैंड करता है वो न्यूज़पेपर में तो अब पब्लिश किया होगा, तो उसका कॉपी को नहीं मिला होता है उसको, सिर्फ डीपीआर दिया बोला। हाँ वो नहीं, आप लिखिएगा नंबर 1 उसका फॉर्म 1 का
ये एपिक नंबर भी देखिए 287 एपिक 287 में ये जो इंफॉर्मेशन ने दिया अमंग देम इसका फॉर्म एक का सीरियल नंबर 1 नहीं मिला 2 तो मिल गया है सैंक्शन ऑर्डर मिला है ना 3 मिल गया है और टीएस मिला है टेक्निकल सैंक्शन ऑर्डर हाँ वो मिला है फाइल नोटिंग तो जरूरी नहीं है और कंप्लीट सर्टिफिकेट को नहीं मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना वो जब सर ऐसे था कि जब अब हम आरटीआई किया तो उन लोग काम धुमाधुम शुरू काम मैंने बिल्कुल वो काम ऐसे बंद करके रखा जी तो जब हम आरटीआई किया तो मेरा भी एक अच्छा हुआ है जी काम तो कंप्लीट हुआ है जी पेंटिंग सेटिंग करके पूरा उन लोग कर लिया कंप्लीट सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और क्या है और फार्म प्रोफेसर को उसको नहीं मिला है ओके the name of the firm that executed the work और फोटोग्राफ वर्क अंडरटेकिंग ये सब भी नहीं मिला photographs of the work है or वही है okay oh, I have the appellant stated that the PIO has provided him incomplete information. The information regarding copy of NIT published in newspaper not provided. Photograph of the work not provided. The name of the firm that was awarded the work not provided. And completion certificate not provided. The rest information had been provided to him after the hearing at the first appellate authority. Third, the representative of the PIO. So, sir, when can we expect that you provide him the rest of the information? This is that the remaining information will be provided to the appellant within 15 days from today. After hearing both the parties, the commission hereby order number 1, the PIO come executive engineer JWD Jajali Division K Panyo District Government of AP to provide the remaining information within 15 days from today, failing which the commission will penalize the PIO as per the rules under RTI Act 2005.
Next, the PIO to intimate the appellant as and when the information are ready to be furnished to the appellant. Next, the PIO to be present in the next date of hearing without failing which the Commission will initiate action as per the provisions under CIF 2005. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without failing which the Commission will presume that the PIO has furnished the complete information to the appellant, and thereby the Commission will hear and determine this appeal ex parte. Notice with order that both the parties, as both the parties are present today in the hearing. Fix the next date of hearing on 4 September 2020. तो आज से लेके 15 दिन तक में आप इनको कवर कीजिए कि इंफॉर्मेशन रेडी है करके आप दे दीजिएगा, नहीं तो हम पेनलाइज करेगा। और दिया नहीं दिया 24 ना 24 सितंबर को एक बार खुलता है। आपको ये लोग 15 दिन के अंदर में आज से कवर करेगा, तो इंफॉर्मेशन हो गया नहीं हुआ आप कवर ले लीजिएगा। आप भी बीच में ऐसे मत बैठे, कवर लीजिए। नेक्स्ट डेट कब लिखा है फाइल में लिखा है, नेक्स्ट कब सुना होगा 24 सितंबर मैं याद करके आओ। हाँ 24 सितंबर आपको और नोटिस नहीं देगा, आप पर्सनली प्रेजेंट है तो इनकेस आप उस दिन नहीं आया तो हम ये समझेगा कि आपने इंफॉर्मेशन को मिलके नहीं आया, तो हम ये केस को बंद कर देगा उस दिन। फिर जब आप नहीं मिलता है तो आप एब्सेंट मत होइएगा। The same party Dohu Penji PIO come executive engineer PWD Ajali division। ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर हॉल एट लॉर्ड विलेज। इसमें आप बताइए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला लॉर्ड विलेज? कुछ नहीं, एक 20 में नहीं मिला, 7 महीना 21 में। तो उस इसमें भी चीफ इंजीनियर तो आपको इंफॉर्मेशन देने बोला है ना, चीफ इंजीनियर का ऑर्डर जो था चीफ इंजीनियर। हाँ इसका लॉर्ड विलेज वाला का। हाँ हमको वो ये बुलाया था, हम उसको बताया है काम ऐसे ऐसे हुआ है बोलते हैं। अभी तो सारा काम भी स्टॉप करके ऐसे दिखा हुआ है, काम किया ही नहीं, पैसा पूरा ले लिया। हम ऐसे ही करते हैं बिल्कुल कहते से। ओके। और ये काम जो ऐसे लास्टिंग होगा और अंदर में हम चीफ इंजीनियरिंग को हम दिखाया ही, चीफ इंजीनियरिंग बोला ये सब तो ठीक नहीं है, ऐसे क्यों काम करता है, उनको गाली भी दिया। दूसरा का है गवर्नमेंट क्वार्टर का ही है, ये तो होने वाला चाहिए होगा, ध्यान होगा फाइल में। तो जी सर, ये जो इंदौर हॉल है लॉर्ड विलेज का इंफॉर्मेशन एक भी नहीं मिला होगा।
कारण जी इसलिए सर ये 6/1/2026 में ना जी। ये कंप्लेंट दिया हुआ। तो के बाद सर इसमें ये था कि उसका जो नेम ऑफ वर्क जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर हॉल है फ्लोर हाँ ऐसे बोलकर नहीं है नेम ऑफ ओ बिल्कुल नहीं हम लोग का ना तो अच्छा। उनको इसको करेक्शन करने के लिए हाँ उसमें जो 24/1/2006 में लेटर दिया है हम लोग डिपार्टमेंट से इसमें सर यहाँ में जी तो उसमें उसको यहाँ में इधर दिया हुआ है रिजेक्ट किया है डिपार्टमेंट साइड से ऐसे नेम ऑफ वर्क नहीं है हाँ उसको अगेंस्ट में तो ओके ओके तो उसके बाद सर जब ये सेकेंड कंप्लेन आया था जी 7/5/2026 में करेक्शन करके नेम ऑफ वर्क को जी तब सर हम लोग का ये जो सीबीआई केस चल रहा था डिवीजन ना ओके और डाटा कलेक्शन में बिजी था फिर उसमें एक्सेल सर बोल रहा ऑर्डर निकाल दिया उसमें सर दिया हुआ है एनेक्सर बना कर दिया है उसमें एक्सेल सर ऑर्डर दिया कि हम लोग सीबीआई में बिजी है अभी कोई भी कंप्लेन आती है हम लोग नहीं लेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम लोग काम में थोड़ा बिजी है ये था अभी जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से लगा सर उसको अभी पर लेकर आते हैं इंडोर इंडोर तो सेल है बाकी पर्पज कुछ भी नहीं लगाया इंडोर तो सेल है आप लोग हमको डिनाई कर रहे हैं इंडोर तो सेल है अभी इंडोर तो अभी लेकिन इसका फाइल तो वापस आपका डिवीजन में आ गया होगा हाँ सर डीबीएस से तो अभी तो प्रोवाइड कर सकेगा हाँ सर स्टिल लाइव वो इंफॉर्मेशन लाया है हाँ ओके अभी सर जो इसमें ये लाइव अब इसका एक रिसिप्ट ले लीजिएगा आप तो रिसिप्ट कर लीजिएगा इंफॉर्मेशन को और देखिए फिर एक एक करके आप ये करो ठीक नहीं है जो मिनट मिनट ऑफ मीटिंग कॉपी कॉपी दिखाओ सर वो अलग अलग निकाल डीटीआर को अलग अलग निकालो आप साइड करो सर उपयोग ये मैंने जो मीटिंग ये सर नहीं है और कॉपी या सब उसको टेस्ट कर दिया मैंने सर ये बना दिया ओके ये सर please। तो सेक्शन ऑर्डर नंबर एनेक्सर बी में जी टेक्निकल सेक्शन एनेक्सर है उसमें जी डीपीआर का सर है जी और फाइल नोटिंग सर ये नहीं है हम जियोटेक एनक्लोज किया है और एग्जैक्टली सर ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो क्लियरिटी नहीं था सर एग्जैक्टली क्या के लिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट ये बोलते हैं ना और समझ में नहीं आता इसलिए नीड मोर क्लैरिटी ऑन जी जी रिपोर्ट ना और पेमेंट रिलीज ऑर्डर सर को ये भी अवेलेबल नहीं हम लोग का इसमें पीसी का बैंक चेक में से मनी रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ये भी सर नॉट कॉपी ऑफ चेक पेमेंट में थ्रू चेक नो पेमेंट हैव बीन मेड थ्रू चेक सर ये वैसे और नेम ऑफ फर्म जो धोनी लेला एंटरप्राइजेस फोटोग्राफ ऑफ व्हाट डीड ये सर जो टेक्नोलॉजी दी और नेम ऑफ इंजीनियर कंसर्न डिपार्टमेंट ये सर ये आप देख लीजिएगा जो जो इंफॉर्मेशन आपने मंगाया ना इन लोगों के पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया बोला अभी आपके सामने में और जो इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट बोल रहा है ये इन लोगों के पास ऐसा कुछ अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है बोलता है तो इसलिए ये लोग समझा भी नहीं है व्हाट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप मांग रहा है कौन वेरीफाई करेगा सब मिनट ऑफ मीटिंग तो होना चाहिए इतना बड़ा पहुंचे नहीं मिनट ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग कैसे करके बड़ा पहुंचे मिनट ऑफ मीटिंग आप कहीं अप्लाई भी नहीं किया लिखा भी नहीं है हमें हमें लिखा नहीं कॉपी ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग कौन सा नंबर है फॉर्म एक का ये फॉर्म नंबर 1 में ही है नहीं, इसमें नहीं है ऐसा हाँ, आप अलग होता होगा दूसरा केस का दूसरा केस का बोल रहा हुआ इसमें कॉपी ऑफ एनआईटी पब्लिश इन डेली गैजेट ऐसे गैजेट में एनआईटी को पब्लिश नहीं करेगा तो दूसरा केस का बोल रहा होगा मैंने मीटिंग ये यहाँ का है तो एक बार आप देख लीजिएगा बीच में ना क्योंकि आपको एक टाइम देता है आज फर्स्ट है तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगा है जो जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास है वो सब आपको आज दिया है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर हॉल बहुत विलेज मल्टीपर्पज हॉल जो देख लीजिएगा
for the sake of order and help the appellant. The appellant stated that no information had been furnished to him till now by the PIO. Heard the representative of the PIO. The representative of the PIO stated that the appellant has applied for information by not properly mentioning the name of the work. Also, the office of the PIO rejected the Form A of the appellant and sent a letter to the appellant on 24/1/2026, citing indicating the reason for which the Form A was rejected. Next, in between, after that, the appellant corrected the name of the project and applied for the information. But unfortunately, a CBI inquiry and investigation was going on with works related to the office of the PIO, and therefore all of his staff were busy in procuring and providing the information to the CBI. Information for the last 10 years of work that was executed by the office of the PIO. But now, after the files were given back to the PIO from the CBI, the information is applied by the appellant and is available with this office have been compiled and brought to the court today to be handed over to the appellant. The hearing of the parties, the Commission hereby order: number one, the appellant to go through the information that the representative of the PIO has provided to him in the court of the Commission. Next, the PIO to be present in the next date of hearing without fail to ascertain from the appellant
that the information provided by the PIO office are complete as applied. In the event of the failure to attain the next hearing, the PIO shall initiate action as per the provisions of RTI Act 2005. Okay. Next, the appellant to go through the information as provided by the PIO and to let the commission know whether complete information have been provided to him or not. In the comma in the next date of hearing. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without fail, failing which the commission will presume that the PIO has provided him the complete information, and therefore this appeal will be heard and determined ex parte. Notice for the date of hearing it not be sent to both the parties, but both parties having to be in the court hearing. It's the next date of hearing on 24th September 2:30, no? 10:30 a.m. तो 24 सितंबर 10:30 तक आप हमको जब नेक्स्ट डेट है उसमें कंप्लीट है या नहीं है वो आपसे हमको बताइए, और अगर अब नहीं आता है तो हम ये सोचेगा कि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिला है इसलिए नहीं आया है, तो हम केस को आपका एब्सेंस में डिस्पोज कर देंगे. You write down, take down the next date, 24th of September, 10:30 a.m. Prohu Penji versus Executive Engineer PWD 0 Division. Excellent present. The PIO represented by MS, MS, Nuinam Gamno, Assistant Surveyor of Works, come PIO with an authority letter from the PIO. इंफॉर्मेशन चाहिए आपको allotted government quarters under lower Subansiri.
copy of allotted quarter, type number and year of allotted, name and address of quarters, jeweler, supporting documents of quarters, owner, location area of quarters with photograph, total number of quarters in level to 1 district. तो इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है? नहीं सर, ऐसा है उस दिन जब उसका ऑर्डर दीजिए इंजीनियर कहाँ? इंजीनियर को बुलाया था, उस समय वो बोला था कि नहीं दे सकते। हाँ। वो दोनों झगड़ा हो, हाँ। तो नहीं दे सकते। उसका बाद क्लास में हमको भेजा है, ये पोस्ट ऑफिस से मिला है। आपका इतना बड़ा हिस्ट्री है आपका, वहां से तो हर बात होती है, कलाकारी गुरु को में अपन बारे आपका काम में कहाँ से दिया, उसमें तो क्वार्टर तो होना चाहिए, इतना थोड़ा सा क्वार्टर वो नहीं होना चाहिए। So ये नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो है, वो जो अंडर पीडब्ल्यूडी डिवीजन हम लोग Yes, jurisdiction में जो है, वो Exactly. है। बाकी डिपार्टमेंट का बात है। हाँ, वो तो जस्टिफाइड। इन लोग के अंदर में जो क्वार्टर है उसका डिटेल्स ही आपको दे पाएगा। बेसिकली जमीन डीसी का होता है, तो डीसी अलॉट करता है ये डिपार्टमेंट को क्वार्टर बनाने के लिए, वो डिपार्टमेंट को ऑफिस बनाने के लिए, ये डिपार्टमेंट को कुछ हॉल बनाने के लिए डीसी अलॉट करता है जमीन। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी जीरो को क्वार्टर के लिए जो जमीन दिया है उसमें जो क्वार्टर बनाया है उसका बारे ही आपको डिटेल्स दे सकेगा। बाकी एंटायर जीरो का क्वार्टर का तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों का नहीं होगा। हम सब जीरो का हम नहीं मांगते, और आप लगा है आपको डिपार्टमेंट नहीं आपका इसमें आप ये नहीं है। Allocate group quarters under lower Subansiri. पीडब्ल्यूडी में डिपार्टमेंट को सर हमको डीसी का भी किया है, पीएचई का भी किया है, डिपार्टमेंट कितना डिपार्टमेंट को इतना मजा से बना के तो देता है। आपको तो वो लोग का पास में जो भी क्वार्टर है पीडब्ल्यूडी के अंदर में, तो आपको तो पूरा दिया हुआ है। डीसी का जितना देखो ना, यहाँ डीसी से कंसर्न नहीं है। पीडब्ल्यूडी जीरो का अंदर में जो भी क्वार्टर है उसका अलॉटमेंट, क्वार्टर नंबर और कौन सा लोकेशन में, सबको तो आपको दिया हुआ है। सीरियल बना के जैसे हाँ, दिया हुआ है, आप नहीं पढ़ा हो। सर वो टैबुलेट नहीं करके जैसे ऑफिस ऑर्डर है वैसे दिया। वही जैसे दिखा रहे ना वहाँ पे, तो वो लोग तो मतलब टैबुलेट करके दिए ना वहाँ पर, और हम लोग जो ऐसे इंडिविजुअल देते हैं। हाँ, तो लोकेशन में भी ये नहीं है 2000, इसलिए सर ये जो ऐसा है 2000 ना एकदम तो वहाँ में ऐसा है कि वहाँ से कितना लोग माने डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो ना, वो क्वार्टर जो माने, क्योंकि आप जब ये करेगा, आप जो वह बेचेगा जोड़ देगा, आपका आदमी बेचेगा, ऐसा करके बेच के उधर बेच नौकरी कर रहा है नहीं कर उसको भी मालूम नहीं है, इसलिए हम आते हैं करना पड़ा, ऐसा करते हैं। आपको तो आपको लेकिन दिया हुआ है। हाँ दिया है, देने में मेरा हिसाब तो ये इनकम्प्लीट होना चाहिए, मैं सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, आपका it is not about being satisfied or not, it's about being completely in receipt of the document. पूरा मिला नहीं मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड है, उसको जज नहीं करेगा, हम जज करेगा आप इंफॉर्मेशन आपको मिला कि नहीं मिला। मिलना चाहिए और मिला भी, आपको दिया भी है। तो हर एक क्वार्टर का बारे में ऑफिस ऑर्डर को ही वो लोग आपको दिया हुआ है, कौन बेच रहा है और इवन कब वेकेट भी होना है वो भी दिया हुआ है, टाइप ऑफ बिल्डिंग। हमसे तो मेरा हिसाब है एक्चुअली स्टाफ तो इतना है, वो यहाँ में इतना है, राइट, तो टोटल स्टाफ को हम ढूंढ नहीं सकते, पता चले। लेकिन
आपका तो ये केस में तो आपका हो गया है, मिल गया है आपको। है। Third, okay then, document stating that the PI has provided him the information as applied, but he feels, he feels that the information might be, might be not complete, and therefore he is not satisfied with the information provided by the PI. Third, the representative of the PI. The representative of the PI stated that whatever quart- quarter they have inside zero township under lower Subansiri district have been provided to the battalion about the name of the name, comma, type, the name of the occupant, as well as the type of the quarters and the location. So, and there is no further information left to be furnished to the applicant. After hearing both the parties, the commission hereby observed. Number one, the commission went went through the information as furnished by the PIL and satisfied that the information had been provided by the PIL to the appellant, comma, completely fulfilled. On verification of the information as provided by the PIL to the appellant, the commission hereby record the statement of the representative of the PIL and find it true and correct. Next, under the above observation, commission hereby satisfies that the information that been furnished by the PIO to the appellant completely, and therefore there is no further need to hear this appeal, and so this appeal disposed of and so on for all. इस बाकी को हम सुनेगा, बाकी आपका केसेस को ना, इसको हम आज डिस्पोज कर दिया। तो आपका जो जो भी है, आपको जो पीआईओ ने
इंफॉर्मेशन दिया, उसको आपसे हम लेके दिखाए तो ये लोग का पास में जो भी क्वार्टर है कि dilapidated कंडीशन में है हो या खराब हो अच्छा हो आपको दिया है, हम सेटिस्फाइड है इनका इंफॉर्मेशन आपको जो दिया, इसलिए इसको और कोई सुनवाई नहीं करेगा, आज इसको हम डिस्पोजल कर देंगे। Thank you so much. Tania June versus Director Department of ATI, Nahalgan, Administrative Training Institute. नहीं है ना, ऑनलाइन नहीं है ना? ओके, अपॉइंटमेंट, ओके, under peon, driver, contingency staff, officer of all MTS posts. Seniority below plus 12 pass certificate for police, 10 pass certificate. And the appellant present, the PIO come, the PIO of the Office of Director, Department of Administrative Training Institute, Government of Arunachal Pradesh, absent despite being served with the notice for hearing today on 27 May 2026. In the sense of the PIO, the hearing could not take place and therefore the hearing adjourned today with the following orders. Number one, the PIO first may send summons to the PIO, come full form report, designation, to be present in the next date of hearing without fail, failing with necessary action as given under the RTI Act 2005 will be initiated against the violation. Next, the PIO to furnish the information as applied by the appellant and not exempted under RTI Act 2005 to the appellant on or before the next date of hearing. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without fail, failing with this commission will presume that the appellant has received the complete information from the PIO and thereby this appeal will be heard and determined ex parte. Send a notice for the next hearing to the PIO come upon resignation and fix the next date of hearing on 24th September at 6:10 am.
इसको एक बार समन भेजता है. Here June versus Piayo come Dipro Alo Western District. सर ये डॉक्यूमेंट किया है Okay. The appellant present, the Piayo present, heard the appellant. The appellant stated that the PIO has furnished him the information today in the court. So the document दिया तो हम close कर देगा ना, and requested the board of the commission to dispose of this appeal. Under the above statement of the appellant, the commission does not need any further hearing of this appeal when the ENDS end of the Form A of the appellant is fulfilled, and therefore this appeal is disposed and closed for. So, sir, we have both of this appeal. Yeah, we have a copy of the information, right? Thank you also. Thank you. Yeah. Bengia Mama versus DMO Kradadi district. Online है. The Yes, sir. appellant present. The PIO come DMO Kradadi district government of Arunachal Pradesh present through online mode. Third appellant. Tell me, have you got any of the information that you have applied? Nothing. The appellant stated that the PIO has not provided him information till now. So PIO, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So the appellant is saying that you have not provided her any of the information till now. Can we know why the information have been denied to her till now? Information was Information was sent to sent her to her WhatsApp WhatsApp in but PDF. in PDF. Okay. On which Uh, date? On which date? and 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 information, information all the papers are ready. papers already. She had She not had not come to come collect the to collect the papers. It is papers. here. It is here. On which date? Can you tell me on which date you send the PDF to the appellant through WhatsApp? डेट को अभी तक चला नहीं सर सर अभी जस्ट बता अभी रहे just हैं बता रहे सर. Okay. The PIO stated that all the information अच्छा has ये been तो sent to the appellant in soft copy through
हमने What- दे तो हमने उसको दिया था WhatsApp, पीडीएफ में WhatsApp messaging app. WhatsApp लेकिन messaging app. बता दीजिए सर 16 जून से Sir, Yes, 16 June 2026. On 16 June 2026. हाँ, नो सर मेरा इधर रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मेरा एक ही नंबर है व्हाट्सएप भी है ये एक ही मेरा बोलेगा नंबर यहाँ उसको पर फोन भी रिकॉर्ड तो है किया था मेरा इधर इसलिए रिकॉर्ड के दिखा बस and सर सर दिलीप असिस्टेंट ने फोन किया था पर्सनली okay. एपेलेंस से। जी सर ये सर मैसेंजर इसमें एक इसलिए हुआ कि आदमी भेजेगा बोला था वो भी या नहीं भेजा उसको रिस्पॉन्स नहीं आया था तो मैंने डोमा डीसी सर को कंप्लेंट किया था जी एआईओ को सर पास दिया था आपका ये 26 दिसंबर 2025 में एआई को दिया था बस एआई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था देन ये आपका डीसी डिप्यूटी कमिश्नर को मैंने अपील किया था आपका ये February 2, 2026 इन दिस मैटर में क्या हुआ कि डीसी का तरफ से एक कॉल आया था मैडम एंड अब उसका आई थिंक क्लियर था ये कॉल किया है कि वो लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है आपको तो आप डॉक्यूमेंट अगर है तो दे दीजिए बोलकर फॉर्म पे इसको तो मैंने उसको दे दिया था उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है सर ये आप तो ठीक बोल सकते हैं यार रिद्धि मैडम को व्हाट्सएप नंबर जो व्हाट्सएप नहीं था बट तो उसका आशुतोष जो पीए है उसको दिया कि आप लोगों को हम ये दिया था पास ये पीआईओ को दिया था सिर्फ पीआईओ रिस्पॉन्स नहीं होकर आप लोगों को अपील किया था बोलकर डेट का साथ तो उसने हाँ देखा इसके बाद पीआईओ मैडम को दिया है कि नहीं दिया उसको पता नहीं सर ये मेरा दिया था 2 जून 2026 को सर पीए को दिया था मैडम की सो देन फिर ये जून मेरा कम दिन में दो बोला जून का दे दिया जैसे को 16 जून आएगा सर ये आपका को हम लोग को नहीं मिला है आप उसको भेज दीजिए मुझे तो सर दे जाइए फॉर्म आप लोग को हम दिया था शायद नहीं मिला हुआ लेकिन हम दिया था सर उसको भेज दीजिए वही है okay. Here report or not इसको सर part the TIO further stated that नहीं पूछने से सर the hard copy and सुन the information is supplied by the appellant are ready at his office to be furnished to the appellant. तो आप जाके वो इंफॉर्मेशन को एक बार कलेक्ट कर लीजिए वो लोग रेडी है बोल रहे हैं वही सर आप बोल लीजिए सर हियरिंग बोर्ड पे पार्टी सबमिशन order number one the appellant to collect the information from the office of the PIO come DMO Karadadi district. Second, the appellant to report back to the commission whether information is received from the PIO are complete or not. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without failing which the commission will presume that the information have been received from the PIO completely and therefore this appeal will be heard and determined ex parte by way of disposing of this appeal. Next, the PIO to be present in the next date of hearing without failing which action as provided under RTI Act 2005 will be initiated against the PIO.
Notice to Council sent to both parties, unless both parties are present today. Fix the next date of hearing on 24th September 10:30. So, 24th September 10:30 am. So, Mr. PIO, I have ordered the appellant to go to your office and collect the hard copy of the information from you. And the next date is fixed on 24th September 2026, 10:30 am. 24th September 2026, 10:30 am. To ascertain whether the information provided by you to the appellant are complete or not. So Yes, please sir. do attend the next hearing on 24th September. And before that, she has to come to your office to collect the information, the hard copy of the information. Yes, sir. The copies are ready. Okay, Yes, sir. fine. Ready. Okay. India Mama versus Executive Engineer PWD Konsa Division Tirap. Online है? The appellant present. The PIO come Executive Engineer PWD Konsa Division Tirap District Government of Arunachal Pradesh absent despite being notified of today's hearing on 27/5/2026 through WT message. In the absence of the PIO, the hearing adjourned with the following order. Number one, send someone to the PIO to be present in the next date of hearing without fail, failing with necessary action as provided under Article 2005 will be initiated against him. Number two, the appellant to be present in the next date of hearing without fail, and failing with the commission will presume that the information as applied had been received completely from the PIO, and therefore this appeal will be heard and determined ex parte by way of disposing this appeal. Send the summon to the PIO. Right. Fix the next date of hearing on September 20th. So you go and collect the information from the DMO and let us know if you have received the complete information. Sir, अभी सर क्या है वो दिखा रही थी करना जुर्म